Hello everyone, this side Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ the client with the health problem of eyes, ears, nose and throat. So guys, आप टॉपिक देख सकते हैं कैटरैक्ट है, रेटिनल डीअटैचमेंट, ग्लूकोमा, adult macular degeneration, nasal surgeries, hearing disorder, memory disease, cancer of the larynx and managing care quality. सो गाइस ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके आई और ईएनटी वाले चैप्टर में मेडिकल सर्जिकल में हमें पढ़ने चाहिए हैं। बट इन केस अगर आपको उतना टाइम नहीं है पढ़ने का, राइट, और सेकेंडली ये टॉपिक इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसकी थ्योरी पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनके एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं ताकि थ्योरी भी कवर हो जाए और एमसीक्यूज भी कवर हो जाए। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए ताकि आप वो भी टॉपिक ओरिएंटेड, ताकि आपका डाटा भी कवर हो जाए और आप एमसीक्यूज भी कर लें। और जो दूसरा चैप्टर है जो इसी तरीके से आपको करना चाहिए वो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव चैप्टर, बिकॉज इन दोनों चैप्टर में इतना ज्यादा क्वेश्चन का जो वेटेज है वो नहीं है, और अगर आएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा जो हम कवर कर लेंगे और उस हिसाब से हम इन दोनों चैप्टर्स को भी कवर कर लेंगे, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और ये दोनों चैप्टर आप छोड़ेंगे भी नहीं, बिकॉज मेजोरिटी क्या होता है हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेते हैं, छूट जाते हैं तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बट हम इन चैप्टर को छोड़ नहीं रहे हैं, हम इन्हें कवर कर रहे हैं बट एमसीक्यूज की फॉर्म में। सो गाइस वी आर गोइंग टू कवर ऑल द डिसऑर्डर्स, ऑल द डिसीजेस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइंट विद कैटरैक्ट। सो आप देख सकते हैं कैटरैक्ट का जो प्रॉब्लम है वो आपको माइंड में है तो ठीक है, नहीं है इट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज यू गोना लर्न लॉट ऑफ थिंग्स while doing the MCQs. So the question number 1 is in front of you. So please just give me the answer. The nurse is observing a student nurse administer eye drops as shown in the figure. What should the nurse instruct the student to do? जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस चीज के अंदर आप स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? Move the dropper to the inner canthus. Guys, inner canthus में मेडिकेशन डायरेक्ट नहीं डाला जाता है। Have the client raise the eyebrows. Eyebrows को रेज करने से क्या ही फायदा होगा? Administer the drop in the center of the lower lid, या फिर have the client squeeze both eyes after administering the drop. So guys, squeeze भी नहीं करनी होती है बिकॉज दवाई बाहर आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर का रैशनल मैं बताऊं आपको, तो ये जो लिड है आपका, इस लिड को ओपन करने पे मेडिसिन सेंटर पॉइंट पे डाला जाता है, सरफेस ज्यादा होता है और आप वहां पर मेडिसिन जो है वो इंस्टिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आप आंसर भी बता सकते हैं फाइंड आउट करके। So let me read the question for others. One day after cataract surgery, the client is having discomfort from bright light. पेशेंट की कैटरैक्ट सर्जरी होने के बाद उसको ब्राइट लाइट से बहुत इशू हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? डिम द लाइट इन द हाउस एंड स्टे इनसाइड फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के लिए आप उसे कमरे के अंदर रख दीजिए डिम लाइट में, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, वेरी रॉन्ग। अटैच सन शील्ड टू एग्जिस्टिंग आई ग्लासेस व्हेन इन डायरेक्ट सनलाइट। तो you know, sun shield kind of things you can use sunglasses that wrap around the side of the face when in the bright light. Use patch the affected eye when it is in the bright light. So patch नहीं लगाते हम लोग guys, just give me the answer. You can pause the video and you can think about it and then give me the answer. So the correct answer over here is option number 3. Let me mark them also. So question number 2, the correct answer is option number 3. Use sunglasses. Guys, आपने देखा होगा बहुत सारे आई डिपार्टमेंट से जब पेशेंट बाहर आते हैं आफ्टर देयर कैटरैक्ट सर्जरी, दे यूजुअली वेयर ग्लासेस, राइट? आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर भी। तो सन ग्लासेस जो रैप करता है अराउंड द साइड ऑफ द फेस, ओके, पूरा कवर कर रहा है एंड व्हेन इन द ब्राइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्लाइंट इज हैविंग कैटरैक्ट रिमूव्ड एंड will use eyeglasses after the surgery. Okay, so the nurse should develop a teaching plan that includes which of the following? Select all that apply. So guys, आपने मुझे इनमें से बताना है कि क्लाइंट कैटरैक्ट रिमूव हो चुका है और यूज कर रहा है आई ग्लासेस, जो कि ऊपर पड़ा था कि आई ग्लासेस यूज करने हैं, यूज कर रहा है सर्जरी के बाद। नर्स शुड डेवलप अ टीचिंग प्लान। तो अब उसको एक टीचिंग प्लान बनाना है, वो क्या टीचिंग प्लान बना सकती है?
images will appear to be 1/3 larger. क्या ऐसा होता है after just cataract removal the patient will experience something big objects, normal object का size उसको थोड़ा बड़ा लगने लगेगा. तो क्या ये ऐसा होगा? लुक थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लासेस, ग्लासेस के सेंटर पॉइंट पे आप देखिए, ऐसा उसको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है. The changes will be immediate. Okay, use handrails when climbing the stairs. Stay out of sun for 2 weeks. Stay out of the sun. मतलब बाहर ही नहीं निकलना है सूरज से, 2 हफ्ता तक बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए. So guys, what do you think? What are the correct answers? What will be the correct answer? Question number 3. You can just आप इसका वो ले सकते हो, होल्ड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, and then you can give us the answer. So guys, the correct answer is option number 1, option number 2 and option number 4. So option number 1, option number 2 and option number 4 are the correct answers. तो आप देख रहे हैं कि कैटरैक्ट के जो ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो सर्जरी को लेकर है, तो भाई फालतू का क्यों डाटा पढ़ना है, बी स्मार्ट. ओके, सो ओरिएंटेड जो डाटा आप देख रहे हो तो इसी ही से रिलेटेड हो कि हेल्थ एजुकेशन, नर्सिस का काम है पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करना, राइट. तो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने कि जब भी कैटरैक्ट का क्वेश्चन देखो आप तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सनग्लासेस लगाने हैं, पेशेंट को साइड रेल यूज करने को बोलना है, इमेजेस थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी और सेंटर पॉइंट पे देखने को पेशेंट को एडवाइस करना है. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, द क्लाइंट हैज हैड अ कैटरैक्ट रिमूव्ड, रिमूव कर दिया गया है कैटरैक्ट. The nurse discharge instruction should include which of the following. अब वो पेशेंट को घर भेज रहे हैं, इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? Keep the head aligned straight, सर को बिल्कुल सीधा रखना है after cataract removal. Utilize bright light in the home. Okay. Use an eye shield at night. Change the eye patch as needed. So guys, क्या लगता है आपको इनमें से what is the correct answer? Change the eye patches as needed, क्या ये आंसर रहेगा? So आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, and then you can give the answer, question number 4. So guys, the correct answer will be here is option number 3. Okay, use an eye shield at night. Why? Because वो लोग स्क्रैच ना करें आंखों को, अभी भी सर्जरी हुई है तो वो गलती से नींद में अपनी आईज को रब ना कर दे. टू प्रिवेंट दैट रबिंग ऑफ द आई वी नीड टू प्रोवाइड यूज आई शील्ड एट नाइट. और गाइस, कीप द हेड अलाइन स्ट्रेट नहीं, टर्न करना है, टर्न करना है, स्ट्रेट नहीं रखना है. ओके, एंड चेंज द आई पैच एज नीडेड. सो गाइस, ये सेकंड डे के बाद चेंज होता है जो आई पैच है. Okay, the head should be turned to the side to scan the entire visual field, and the surgeon changes the eye patch on the second post-operative day. Question number 5 in front of you. The client with a cataract tells the nurse about being afraid of being awake during an eye surgery. तो patient थोड़ा डर रहा है, and which of the following responses by the nurse would be the most appropriate? इनमें से कौन सा response सबसे बेस्ट रहेगा? आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, आप अपना आंसर बता सकते हैं. Have you ever had any reactions to local anesthetic in the past? Why is it that disturb you about the idea of being awake? By using a local anesthetic, you won't have nausea, vomiting after the surgery. There is really nothing to fear about being awake. तो गाइस, हम ऐसे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है, हम ऐसे नहीं बोल सकते पेशेंट को कि क्या बात है इसमें, डरने की क्या बात है. हम बोलते हैं ऐसा हॉस्पिटल में, बट ऐसा नहीं बोलना है आइडली. सो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है कि दैट्स रियली नथिंग टू फियर अबाउट बीइंग अवेक, ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डरो, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2. ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज इट दैट डिस्टर्ब यू अबाउट द आइडिया ऑफ बीइंग अवेक? आप ओपन एंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप पेशेंट से जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी चीज है जो आपको डरा रही है, आप मुझे बता सकते हो. So the option will be option number 2. Question number 6, guys. A client tells the nurse about the vision being blurred and hazy throughout the entire day. The nurse should recommend that the client do which of the following? So the client बता रहा है पेशेंट को, नर्स को बता रहा है कि भाई मेरी विजन बड़ी ब्लर हो रही है, हैजी हो रही है, पूरा दिन ऐसा होता है. तो क्या नर्स को रिकमेंड करना चाहिए?
Purchase a pair of magnifying glasses, wear glasses with the tinted lenses, okay, schedule an appointment with an optician, okay, schedule an appointment with an ophthalmologist. So guys, यहाँ पर आपका knowledge assess किया जाता है that do you know the difference between optician and ophthalmologist? So guys, जो technicians होते हैं, you know, that is optician, and आपकी जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी चाहिए वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ करनी चाहिए. And you know what, when I was like preparing for OSCE, in our OSCE exam we have a fall risk assessment form. In that form, we just try to find out whether the patient is experiencing any, you know, fall risk, you know, or not. So if the patient is on high risk, we always ask them that we will schedule appointment for to the ophthalmologist so that they can make sure your vision is fine or not, because sometimes we are not aware of our vision loss or vision changes and we might get a fall. Just to prevent that, we will refer you to the ophthalmologist. Same line है, same question. Okay, so जब भी मरीज बोलता है कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ अजीब सा दिखता है, तो भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं. Okay, so the answer for question number 6 will be option number 4. Question number 7, the nurse is to instill drops, okay, of phenylephrine, okay, hydrochloride, neosnephrine into the client eyes eye prior to cataract surgery. डाला जाता है which of the following expected outcome. So guys, ये जो आपका phenylephrine है, हाइड्रोक्लोराइड, ये किस प्रकार की ड्रग है, ये क्यों डाली जाती है, ये इसका आपको आंसर लगाना है. लेकिन आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है कि कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, आईज की सर्जरी के दौरान प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना या प्यूपिल को डायलेट करना. अगर आपको ये जानकारी है तो ये ड्रग अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं. सो डायलेशन करना है प्यूपिल का, ब्लड वेसल का, या डायलेशन करना है प्यूपिल का, कंस्ट्रिक्शन करना है ब्लड वेसल का, या फिर कंस्ट्रिक्शन करना है प्यूपिल का, कंस्ट्रिक्शन करना है ब्लड वेसल का, या फिर कंस्ट्रिक्शन करना है प्यूपिल का पर डायलेशन करना है ब्लड वेसल का. तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, यू कैन पॉज एंड यू कैन गिव मी दी आंसर. सो गाइस, एक बात है यहाँ पे जो थोड़ी सी रैशनल टाइप की है कि जब भी हम किसी जगह की सर्जरी करते हैं, किसी भी पार्ट की सर्जरी करते हैं, वी डोंट वांट ब्लीडिंग, तो हम उस पार्ट को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट, ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करेंगे. तो ये तो श्योर है कि ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में से एक आंसर है. अब इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाता अगर आपको पता होता कि आई के कैटरेक्ट सर्जरी में प्यूपिल को डायलेट करना है या कंट्रैक्ट करना है. सो गाइस, डायलेट करना है. So option number 2 will be the correct answer. Question number 7, option number 2, the dilation of the pupils, constriction of the blood vessel. तो इससे क्या हुआ, आपको इस ड्रग का नाम भी पता लग गया और आपको इस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन भी पता लग गया. तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो, लेकिन स्टिल थोड़ा बेसिक डाटा तो चाहिए, बिकॉज यू शुड नो दैट कि सर्जरी के दौरान डायलेशन करना, पीपल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ब्लड वेसल्स का. और वो कब आएगा, जब आप कार्डिक चैप्टर पढ़ोगे, जब आप फार्मा अच्छे से पढ़ चुके हो, then you will easily solve this question. Next, question number 8, a short time after cataract surgery, okay, the client has nausea, the nurse should first what. तो short time after cataract surgery, थोड़े वक्त में उसको nausea vomiting. और आपको एक चीज और बता दूं, ears, eyes, nausea vomiting very common symptom, very very common. So आप क्या करेंगे, नर्स शुड, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स अंटिल द नॉजिया सबसाइड, एक्सप्लेन दैट दिस इज अ कॉमन फीलिंग दैट विल पास क्विकली, टेल द क्लाइंट टू कॉल द नर्स promptly if vomiting occurs, medicate the client with an antiemetic as prescribed. Guys, simple, medicate the patient. Don't think like we are nurses, we cannot, we cannot ask, we cannot recommend the medication. उन्होंने रिकमेंडेशन लिखी भी नहीं है यहाँ पे, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप रिकमेंड कर रहे हो, उसमें लिखा है मेडिकेट करना है द क्लाइंट विद एन एंटीमेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, राइट. तो मेंशन किया कि जो भी प्रिस्क्राइब किया वो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ एज प्रिस्क्राइब नहीं लिखा होगा देन यू कैन नॉट गो, बिकॉज वी कैन नॉट रिकमेंड मेडिकेशंस. सो एज प्रिस्क्राइब्ड. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑलराइट. Next, question number 9.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग कैटरैक्ट सर्जरी, इनमें से कौन सा पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है कैटरैक्ट सर्जरी का? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो आपने सिलेक्ट करना है सारे के सारे ऑप्शंस। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोऑप्थेल्मोमाइटिस, ओके, and then after retrobulbar hemorrhage, rupture of posterior capsule, suprarachnoidal hemorrhage or vision loss. Okay, so question number 9, the correct answers here are option number 1 and option number 5. Option number 1 and option number 5. Now let me give you the rationale ताकि आप ये सारे पॉइंट्स को इजीली समझ सके ये क्या लिखे हैं। सो गाइस आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या है कैटरैक्ट सर्जरी की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, सो द कॉम्प्लिकेशन विल बी एक्यूट बैक्टीरियल एंडोऑप्थेल्माइटिस एंड विजन लॉस। तो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट की विजन लॉस भी हो सकती है और किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये बाकी के ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो एक्यूट बैक्टीरियल एंडोऑप्थेल्माइटिस कैन अकर अबाउट 1 out of 1000 patients, okay, and organisms that are typically involved include Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus. आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि अगर कैटरैक्ट सर्जरी में इंफेक्शन होता है कॉम्प्लिकेशन के दौरान, द आंसर विल बी Staphylococcus aureus, okay, Staphylococcus and Pseudomonas and Proteus species, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया के जो टाइप्स है वो प्रॉब्लम लीड कर सकते हैं। एंड ओके, विजन लॉस इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसी से ही पेशेंट का विजन लॉस भी हो सकता है, तो वो भी कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। इन एडिशन विजन लॉस कैन बी द रिजल्ट ऑफ माल पोजिशन, ओके, माल पोजिशन ऑफ द इंट्राओकुलर लेंस, implant or opacification of the posterior capsule, जबकि बाकी के ऑप्शन बोल रहे हैं retrobulbar hemorrhage is a complication that may occur right before surgery, okay, and is a result of retrobulbar infiltration of anesthetic agents, and last, rupture of the posterior capsule and subarachnoid hemorrhage are both complications that can occur during surgery. So option number 3 and option number 4 are the complication during surgery, and retrobulbar hemorrhage is a complication before surgery. Okay, so bleeding हो सकती है, okay, before surgery, क्योंकि कैटरैक्ट अगर ठीक नहीं होता है तो उससे पहले किसी भी एनेस्थेटिक इफेक्ट से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। रप्चर हो सकता है पोस्टीरियर कैप्सूल का ड्यूरिंग द सर्जरी, और सब एरेक्नॉइड हैमरेज भी हो सकता है ड्यूरिंग द सर्जरी, जबकि विजन लॉस और बैक्टीरियल एंडोऑप्थेल्माइटिस इट विल अकर potential complication after the surgery. So guys, question number 1 and 5 are the correct answer. Now let's move on to the question number 10. The nurse is instructing the client about post-operative care following cataract removal. So the nurse is instructing the client about post-operative care following cataract removal. Which position should the nurse teach the client to use? कौन सी position आप patient को दोगे? So you can see option number 1, remain in semi-forward position, okay, position of the feet higher than the body, feet का तो कोई लेना देना नहीं है, lie on operative side, no, वो pressure डाल सकता है उधर, place the head in a dependent position. So guys, for question number 10 the answer will be option number 1. Option number 1 is the correct answer, okay. So the nurse is instructed the client about post-operative care following the cataract removal, semi-forward position. The nurse should instruct the client to remain in semi-forward position on a non-operative side, okay. Positioning the feet higher than the body does not affect the operation eye. Placing the head in dependent position could increase the pressure within the eyes. So we will not do that. Next, question number 11. After returning home, okay, a client who has had cataract surgery will need to continue to instill eye drops in the affected eyes.
The client is instructed to apply slight pressure against the nose at the inner canthus of the eye after instilling the eye drops. क्यों डाला जाता है? What do you think? The expected outcome उस प्रेशर को अप्लाई करने की क्या है? Prevent the medication, okay, from entering the tear duct. Yes, that's true. Prevent the medication from entering the tear duct में ना एंटर कर जाए, इसलिए हम पिंच कर देते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो मेडिसिन वहीं रुकी रहे, टीयर डक्ट में ना जाए. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. टू डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, ओके, pressure following cataract surgery, the nurse should instruct the client to avoid. क्या नहीं करना है पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी? गाइस, आपको प्रेशर नहीं डालना है, कफिंग. That is the correct answer. Option number 2 will be the correct answer, cuffing. Cuffing के अलावा गाइस आपको ध्यान रखना है that ये इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज करती है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग इंट्राओकुलर प्रेशर इज लाइक स्नीजिंग, क्राइंग, स्टेनिंग. ये भी कुछ ऑप्शंस हैं तो ध्यान रखना है. स्नीजिंग, लाइंग, ओके, क्राइंग, सॉरी, स्टेनिंग. And lying, supine, deep breathing, ambulation will not affect. The last question of this topic is, after cataract removal surgery, the client is instructed to report sharp pain in the operative eye because this could indicate which of the following or post-operative complications. So, after cataract removal surgery, the client is instructed to report sharp pain in the operative eye because this could indicate which of the following post-operative complication. वैसे तो दो तो मैंने आपको सर्जरी के बाद बता दी, विजन लॉस एंड एक्यूट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट. बट यहां पर आपको क्या लगता है वो शार्प पेन जो है उसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 इज डी अटैच्ड रेटिना, ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज प्रोलैप्स ऑफ द आइरिस. ऑप्शन नंबर 3 एक्स्ट्रा कैप्सुलर इरोजन. ऑप्शन नंबर 4 इंट्राओकुलर हैमरेज. गाइस, हैमरेज, इंट्राओकुलर हैमरेज आपका जो है वो उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है. लेट मी गिव यू द रैशनल. सडन शार्प पेन आफ्टर आई सर्जरी should suggest to the nurse that the client may be experiencing intraocular hemorrhage. The physician should be notified promptly. Detached retina and prolapse of the iris usually painless. तो detached retina and iris जो का जो prolapse है वो painless होगा, okay? And extra capsular erosion is not a characteristic, related with the sharp pain. They have no relationship. So guys, ये कुछ क्वेश्चंस थे कैटरैक्ट के. आई होप जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रही हूँ आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर आपको लगते हैं कि इनका वेटेज बहुत कम है, इट्स बेटर टू सॉल्व एमसीक्यूज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन रीडिंग फालतू की थ्योरी. इट्स बेटर टू सॉल्व द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दैट टॉपिक ताकि आप एमसीक्यूज भी कवर कर लें. अब आई एम श्योर कैटरैक्ट का कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज आपको इतना डाटा क्रिएट आपके माइंड में हो चुका है. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज रेटिनल डीअटैचमेंट. आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच सम 2 minute 1 minute video of retinal detachment and then come back and solve the MCQs because these questions are also going to make you learn, make you practically आपको improve करने का इधर काफी रोल प्ले करेंगे क्वेश्चंस. तो let's start with the retinal detachment. Question number 14 is in front of you. The client is diagnosed in the emergency department with a detached retina and the right eye. Nurse should do which of the following first? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पहले किया जाएगा? The client is diagnosed in the emergency department कि भाई उसका रेटिना डिटैच हो चुका राइट साइड में. The nurse should do which of the following first? इनमें से कौन सी चीज जो नर्स है वो सबसे पहले करेगी? So guys, question number 14, option number 1, apply compresses to the eye, instruct the client to lie prone, remove all the bed pillows and promote measure that limit mobility. So the correct answer will be of this question is option number 4. Okay, promote measure that limit mobility. Why? ऐसा क्या है? So guys, let me give you the rationale. Promoting measure that limit mobility may prevent further injury. Okay, so retinal detachment हुआ है
इमरजेंसी में आया है, वो गिर सकता है, दिख नहीं रहा है, किसी का रेटिना डिटैच है तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, तो भाई उसको सीधा सीधा पहले बेड पे लिटा देना है सबसे पहले, सबसे पहले। क्योंकि अगर आपकी आंखों में कोई मिट्टी डाल दे, कुछ कर दे, तो यू विल बी लाइक सबसे पहले आपको बिठाएंगे, पानी मेरे आईज में डालेंगे, बट वो फॉल मेजर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो प्रमोट करना है मेजर दैट लिमिट मोबिलिटी, ओके। एंड रैशनल following surgical repair of detached retina, cool and warm compression are applied. So apply cold, warm after surgery. Okay, and the client should avoid lying face down. Okay, lie prone नहीं लेटना है उसको, stopping and bending, bending pre-operatively. Okay, ऐसा नहीं करना है. It is not necessary to remove all pillows. ऐसा कुछ भी rational नहीं है इसका. So we will go for promote measure that limit the mobility. Okay. A client with the detachment of the retina is to patch both eyes. Okay, तो detached retina वाला को patch लगाना है दोनों eyes में. The expected outcome of patching is to what? So retina detach में आपने दोनों को patch लगा के cover कर दिया. इसका rational क्या है? Option number 1, reduce the rapid eye movement. Okay, yes, that's true. रैपिड आई मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम पैच लगा रहे हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए. आईज खोलते तो रैपिड मूवमेंट रहती है आईज की, और रेटिना डिटैच हुआ है तो और कॉम्प्लिकेट कर सकता है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 यू विल डू पैचिंग द आईज हेल्प डिक्रीज रैंडम आई मूवमेंट दैट कुड enlarge worsen retinal detachment. Although clients with eye injury frequently are light sensitive and preventing infection is important, but the specific goal is to reduce rapid eye movement, resulting the eye as indirect way to staining the object. तो बाकी भी सही है, बट यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फर्स्ट जो आउटकम कवर करने की है वो बेसिकली आईज के मूवमेंट को कम करने की, पैच लगाने का जो आउटकम है वो इसलिए है. Question number 16, guys. The client with retinal detachment in the right eye is extremely apprehensive and tells the nurse, "I'm afraid of going blind." Okay, detachment हो चुका है राइट आई में, extremely apprehensive, और नर्स को बता रही है मुझे अंधे नहीं होना है, मुझे नहीं होना है. It would be so hard to live that way, you know. So she's like very scared, very scared. What factors should the nurse consider before responding to this statement? इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो नर्स को कंसीडर करना है कुछ भी करने से पहले? What should she consider? Repeat surgery is impossible. So if this procedure fail, vision loss is inevitable. वापस नहीं आ पाएगी. The surgery will only delay blindness in the right eye, but vision is preserved in the left eye. More and more services are available to help newly blind people. ऐसा तो नहीं बोल सकते कि don't worry, आप अंधे हो रहे, कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं, हमारे पास ऐसा है, आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से निकाल पाओगे. ये तो गलत है ऑप्शन. तो गाइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो ऐसा होता है जो बिल्कुल बायकॉट होता है, तीन में से आपको आंसर देना होता है, और तीन में से अगर एक सिलेक्ट ऑल द अप्लाई आ जाता है तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एनसेलेक्स में, नॉट इन नॉर्सेट. नॉर्सेट में तो जॉनसन है सो है, वरना आपका क्वेश्चन गलत. Optimism is justified because surgical treatment has 90 to 95% success rate, guys. Option number 4. तो आपको ये बात अगर नहीं पता थी तो आप ध्यान रख लीजिएगा that untreated retinal detachment result in increasing detached and eventful blindness, but 90 to 95% of client can be successfully treated with surgery. If necessary, the surgical procedure can be repeated about 10 to 14 days after the first procedure. अगर requirement है तो. Many more services are available for newly blind people, but ideally this client will not need them. Surgery does not delay blindness, और surgery blindness delay नहीं करती है, सब गलत है. So the answer will be option number 4. Question number 17, guys. Which of the following statement would provide the best guide for activity during the rehabilitation period for the client who has been treated for retinal detachment? So guys, question number 17 का आंसर है option number 1. Activity is resumed gradually. The client can resume usual activities in 5 to 6 weeks. सब सही हो जाता है. Next question number 18, guys. Which of the following goals is a priority for the client who has undergone surgery for the retinal detachment? इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है that this option is like the important one? प्रायोरिटी दोगे आप. क्वेश्चन नंबर 18.
So guys, the correct answer for this question is option number 2. Prevent an increase in intraocular pressure. IOP नहीं बढ़ने देना है रेटिनल डीअटैचमेंट में, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी बाकी चीजें भी ठीक है, बट प्रायोरिटी आप जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर को दोगे। ओके, नेक्स्ट गाइस, द थर्ड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ग्लूकोमा, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आप पॉज कीजिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए, जब मैं आंसर बताऊंगी तब आप बता सकते हैं। क्लाइंट विद ग्लूकोमा इज टू रिसीव 3 GTT ऑफ acetalozolamide in the left eye. Okay, what should the nurse do? Ask the client to choose the right eye while administering the drug in the left eye. Have the client look up while the nurse administering the drops. उसको ऊपर की तरफ देखना है। Have the client lift the eyebrows. Guys, ये गलत है, eyebrows वगैरह के साथ कोई लेना देना नहीं है। Wipe the eyes with a tissue following administration of the drops. That is also wrong. आप नहीं wipe करोगे। Guys, option number 2 is the correct answer. Question number 20. Question number 20. A client who has been treated with chronic open angle glaucoma. So guys, जो ग्लूकोमा होता है वो 2 टाइप्स का है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शॉर्ट में आपका ENT कवर करूंगी। ओके, so this is the part 1. Part 2 will be MCQs. I'm not sure at the moment, but ये questions आपको मिल रहे हैं। अगर आपकी इनकी थ्योरी देखना चाहते हो शॉर्ट में, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। ओके, यू विल बी एबल टू सी, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे डेफिनेटली वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उसका जो मैं हेडिंग दूंगी दैट विल बी ENT। ओके, सो आप उसे देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको वैसे भी मैं यहाँ पे भी बताई दूंगी। सो अ क्लाइंट हु हैज बीन ट्रीटेड फॉर क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा फॉर 5 years ask the nurse, how does glaucoma damage my eyesight? इसने कैसे डैमेज किया? The nurse reply should be based on the knowledge, कि भाई कैसे ग्लूकोमा आपकी जो आई साइट है उसको डैमेज करता है। So guys, what will be the answer? The answer will be option number 2, causing intraocular pressure. IOP बढ़ता है, सब लोग जानते हैं कि ग्लूकोमा में IOP इंक्रीज होता है। I think it's like 25 mmHg, राइट? तो आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से 25 mmHg होना चाहिए है। अगर वो बढ़ता है तो आपकी आई साइट जो है वो जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट विद क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा फॉर व्हाट? असेस करेगी, किस चीज के लिए असेस करेगी गाइस? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आपने मुझे बताना है। सो गाइस, जो क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा है, जो आईओपी बढ़ाता है, वो आपकी पेरिफेरल विजन को डैमेज करता है। पॉइंट याद रखना है आपको। So decreasing the peripheral vision, option number 4. Okay, so the rationale is, although chronic open angle glaucoma is usually asymptomatic in the early stages, asymptomatic, peripheral vision gradually decreases as the disorder progress. Eyes pain is not a feature. Okay, eyes में दर्द होना इसका फीचर नहीं है। Okay, इसका फीचर एक तो था इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ाना, दूसरा फीचर है हमारे पास पेरिफेरल विजन का जाना, दर्द वगैरह नहीं है यहाँ पे। इसीलिए अर्ली स्टेज में कुछ पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि ग्लूकोमा से जूझ रहा है पेशेंट। ओके, एंड इज कॉमन क्लाइंट विद द पेन इज नॉट अ फीचर ऑफ COAG, बट इट्स कॉमन क्लाइंट विद एंगल ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है। एक्सेसिव लैक्रिमेशन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ दिस, इट मे इंडिकेट अ ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, नॉट COAG। ओके, so option number D is the correct answer. So guys, question number 2, question number 20, option number 2 the correct answer. Question number 22 guys, question number 22, which of the following should the nurse provide as a part of the information prepare for the client for tonometry? अगर आप पेशेंट को टोनोमेट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, what part of information she need to tell. So guys, the answer here is option number B. It is a painless procedure with no adverse effect. So the answer will be 22, option number 2. Tonometry, which measure intraocular pressure, okay, is a simple, non-invasive and painless procedure that requires no particular preparation or post-procedure care and carries no adverse effect. It is not necessary to dilate the pupil for tonometry. Question number 23 guys, question number 23. A client used
टीमोलोल मैलेट, टीमोटिक बहुत इंपॉर्टेंट ये ड्रग है, आई ड्रॉप्स है। द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस ड्रग इज टू कंट्रोल ग्लूकोमा बाय व्हाट? क्या करेगा गाइस? ये आपके एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन को कम करता है, ये आपको रट लेना पॉइंट। ओके, सो द आंसर विल बी रिड्यूसिंग एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, the nurse observe the client, okay, the nurse observe the client, okay, क्या ऑब्जर्व कर रहा है क्लाइंट? इंस्टिल किया जा रहा है। ओके, सो द नर्स ऑब्जर्व्स द क्लाइंट इंस्टिल आई ड्रॉप। द क्लाइंट सेज आई जस्ट ट्राई टू हिट द मिडल ऑफ माई आई बॉल, बस हिट ही कर दिया था। सो द ड्रॉप डजंट रन आउट ऑफ माई आई। द नर्स एक्सप्लेन, ये जो तरीका ये गलत है वैसे तो जो तरीका यूज कर रहे हैं। ओके, सो द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट इंस्टिल आई ड्रॉप्स। The client says, I just tried to hit the middle of my eyeball, so the drop don't run out of my eyes. The nurse explained the client, okay, explain the client about this method. This is very wrong. क्या कर सकता है ये? Corneal injury कर सकता है, because आपके eyes का जो outer part है, that is a cornea, right? वो corneal injury कर सकता है. So guys, question number 25 in front of you. Question number 25. Which of the following clinical manifestations should the nurse assess when the client has an acute angle closed glaucoma? एक बात इसमें दर्द होगा, it is a painful one. Okay, so question number 25 का आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, सडन आई पेन। तो मैंने बताया वही सेम चीज यहाँ पे गाइस देखो पूछी जा रही है। अभी ऊपर क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि जो क्लोज्ड वाला है वो पेनलेस है, एक्यूट वाला पेनफुल वाला है। बस इतना ही डाटा आएगा पेपर में भी आपको, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो यू नो जस्ट लाइक दैट। 26 क्वेश्चन गाइस, 26, a client has been diagnosed with acute episode of angle closed glaucoma. The nurse planned the client nursing care with the understanding that the acute angle closed glaucoma is what? So guys, 26, the answer will be option number 3. It is a medical emergency that can rapidly lead to blindness. जबकि chronic वाला कैसा था? Painless था और वो एकदम से प्रॉब्लम नहीं करता है, वो पेरिफेरल को अफेक्ट करता है, और वो ग्लूकोमा है वो पेरिफेरल को अफेक्ट करता है। अर्ली स्टेज में तो पता भी नहीं चलेगा। एक्यूट में जो एंगल क्लोज ग्लूकोमा है, एंगल क्लोज ग्लूकोमा है, वो आपका विजन, आपके विजन को भी लॉस कर सकता है। सो 26, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 25, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस, नाउ द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर is acute macular degeneration. Okay, so the client with adult macular degeneration, question number 27, I'm going to tell you the answers. तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप होल्ड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 is option number 3. The correct answer of question number 29, it's 4. The correct answer of question number 30, you can see in the macular degeneration, the center vision is blackened out and only the outer visual field are clear. तो आप देख सकते हैं आंसर, जो बेस्ट पिक्चर आप पिक करने वाले हैं, that will be guys, वो आप देख सकते हो, मैंने बता दिया, आपको दोबारा से बता रही हूं, this one. Okay, so the macular degenerative, the center vision is blackened, okay, outer vision is clear. तो इसका आंसर आएगा this one. Question number 31 guys, the answer will be option number 3. The question number 32, the answer will be option number 2. Okay, and the last part guys, last part we have here, question number 33 in front of you. The correct answer will be option number 30. Question number 33, the correct answer will be option number 2. Question number 34, the correct answer will be option number 1. Question number 35, the correct answer will be option number 2. Last we have hearing disorder. Question number 36, the correct answer will be option number 4. Okay, option number 4. 37 guys, question number 37, the correct answer will be option number 2. Question number 38, the correct answer will be option number 2. 39, the correct answer will be 1, 2, 3 and 5. Question number 40 guys, the correct answer will be 2 and 3. Question number 41 guys, question number 41, the correct answer will be option number 4.
Question number 42, the correct answer will be option number 3. Question number 43, the correct answer will be option number 1. So 42, the answer is 3. 43, the answer is 1. 44, the correct answer is option number 2. Okay. 45, the correct answer is option number 1. 46, the correct answer will be option number 1. 47 guys, 47, the correct answer will be option number 4. Now guys, we are going to cover Meniere's disease. Okay, मैं आपको बता दूं Meniere's disease आपका जो पेशेंट है वो इंटरनल इनर पार्ट जो है आपके ईयर का, ओके, द इनर पोर्शन, द कोक्लिया, दीज आर अफेक्टेड. सो अगर क्लाइंट को वर्टिगो है और यू नो द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट इंजरी रिलेटेड टू ऑल्टर्ड इमोबिलिटी एंड गेट डिस्टर्बेंस, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है, तो क्या क्या आंसर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 49 guys, the answer will be option number 1. Question number 50, the answer will be guys option number 2. Question number 50, the answer will be option number 2. Okay, and for 49 the answer will be 1 and 2. 51 guys, 51 the answer will be option number 4. 52 guys, the answer will be 1, 2 and 3. Okay, the client with cancer of the larynx guys. Okay, larynx. So guys, Meniere's disease हमने क्लियर कर चुके हैं. अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर 53, आपके स्क्रीन के सामने है. The answer of question number 53 is 4. Okay, the answer of 54 question will be 1, 2, 3 and 4. Question number 55 in front of you guys. The answer will be 1, 2 and 3. Question number 56, the answer will be option number 1. Question number 57, the correct answer is 2. And guys, last question number 58, the answer will be question number 4. आपको इस वीडियो को बार-बार वॉच करना है. जब भी आप ENT सॉल्व करना चाहते हैं, you can come to this video, you can watch the questions and answers. Okay? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक. ओके, तो ENT हम कवर कर चुके हैं. ये क्वेश्चंस अगर आपको आ चुके हैं, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू. आपको और ज्यादा डाटा फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज मोर देन इनफ. नाउ इन द सेकंड वीडियो आई एम गोइंग टू कवर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव मेडिकल सर्जिकल क्वेश्चंस. ओके, और इसके अलावा इसका शॉर्टकट में मैं एक वीडियो बना दूंगी थ्योरी बेस्ड, जिसमें आपको जल्दी से सारा थ्योरी देखना है तो आपको देख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड प्लीज इन क्वेश्चंस को जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए. रैशनल्स उतना ज्यादा समझिए, क्यों है क्यों नहीं है. सर्च इट, डू योर हार्ड वर्क करने पे ही आपको रिजल्ट मिलेगा. जो भी जिस भी एग्जाम का आप प्रिपेयर कर रहे हो, हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे. अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. सिंपल एज क्लियर.